Thank you very much. Now I would like to call to the stage a man who needs absolutely no introduction to give our keynote address, Mr. Rahat Kazmi. Assalamu alaikum, everyone. I had come with a key and lot of notes, but इतनी देर लगी इस प्रोग्राम में कि चाबी भी कहीं गुम हो गई और notes भी कहीं खोए गए. So I'm no longer a keynote speaker, I'm just a speaker. Know that when they asked me to come here, I wasn't very sure कि क्या बात की जाए. Anecdotal बात की जाए या academic बात की जाए. हमारे दोस्त जो हैं अनवर मकसूद, वो ज़ुबैदा तारिक के भाई हैं. तो एक दिन मैंने उन्हें फ़ोन किया कि आई विश टू स्पीक टू ज़ुबैदा तारिक. मैंने उनसे कोई टोटका पूछना था. तो कहने लगे बिल्कुल नहीं, आप उनसे बिल्कुल नहीं पूछिएगा. मैंने कहा अनवर साहब क्यों नहीं पूछूं मैं उनसे, वो बता देती हैं. वो मेरे कपड़े पे वो कॉफ़ी का दाग लग गया तो वो उतारना है. कहने लगे खुदा की कसम एटम बम बनाने की तरकीब बता देंगी तुम्हें कि यूरेनियम 235 इंस्टेबल को ज़रा सा लहसुन में घोल के ज़रा सा पानी डालना, उसका प्रेशर कुकर ऊपर से बंद करके धीमी आंच पे पकाना, बेटा खूब धमाका होगा. तो मैंने साहब को इसलिए सुनाया है कि मीडिया के बारे में मेरी पहली जो बात, मैं बहुत छोटी सी बात करूंगा, आई होप नॉट मोर देन 10 मिनट्स. पहली बात तो यह है कि लोगों का ख्याल ये है कि मीडिया का बहुत ज़्यादा असर माशरे पर होता है. यकीनन होता है, लेकिन इसलिए होता है कि वो जो टेक्नोलॉजी इटसेल्फ जो माशरा क्रिएट करती है अपने आने से, वो चेंजेस होती है. ये कहना कि माशरा आपको बदल के रख देगा यानी मीडिया आपको बदल के रख देगा, आई डोंट बिलीव इन दिस. आई डोंट थिंक मीडिया कैन डू दैट. नो रिसर्च सपोर्ट्स इट. देयर इज नॉट अ सिंगल रिसर्च अवेलेबल which says that media can change attitudes and habits. It does not. So this idea and this myth which is there that media changes society, it does so by its presence, but not by its content or by its message. This is incorrect to say. There is no research supporting it. There is no evidence on it. It is just a myth which we keep perpetuating. If anybody can quote a study to the alternate, I'll be enlightened. I know of one study done, very vague sort, which is a laboratory conditions, that one child dismembered the doll after watching a violent program. But apart from that, there is no evidence. There is no evidence at all. Because human attitudes and habits are formed over a period of time. They cannot be changed easily. Not at all. They can be reinforced. Yes. तो पहली बात तो आज मार्क ट्वेन ने एक दफ़ा कहा था कि the news of my death is highly exaggerated. I think that the media का जो effect है, it's highly exaggerated. It is not so. Because what you are doing is this only reinforcive. You don't bring about change. The second point on that is that if you look at the media today, it has to work under what we call an episteme. An episteme, we understand, is the knowledge structure in which it is operating. What is happening at media today? Three things. And I stay warned of that. One, avoidance of science completely. Nobody wants to talk about science, physics, chemistry, biology. They are absolutely denied access to them in the media of Pakistan. The second thing is obscurantism. Tarot card reading, hand reading, आपके मसाइल का हल. Hello, half the television is about कि अच्छा आप अपना वो फ़ोन करते हैं, वो कंप्यूटर पे मिलाते हैं और कहते हैं आपके यहाँ परसों जो है एक 18 साल बच्चा पैदा होगा. किस तरह से हो जाएगा भाई? Nobody bothers about to say that what has happened in physics lately. Nobody spoke about the fact that there is a particle which we have discovered which can travel at more than the speed of light, which challenges the basic foundations of physics. Why is it that we never discuss it? We don't think it is important? No Nobel Prize winner has ever been discussed on television. Not a single one. From literature
to economics or fielding matter in mathematics. We don't think that it is important. So my ruse with media is this. One, that they are perpetuating this idea of foolishness. That there is a prediction in stars, and there is jantari, and there is hal ehwal and tarot card reading, etc. Half the programming is on that. I think this discourse itself is highly, highly disruptive of human life. It is making us obscurantists. We don't seem to believe in science. अजीब व गरीब बात है, एक साहब जो आलिम हैं, आलिम, उनसे टीवी पे ये पूछा गया कि खुला ख़वातीन के लिए क्यों है और मर्दों में तलाक क्यों, एक जैसी बात क्यों नहीं। वो कह लेंगे देखिए, अगर आप किसी फर्म के सरबराह हों, किसी इदारे के, तो आप किसी को डिसमिस कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरा शख्स जो आपके नीचे काम कर रहा है, मातहत आपके, उसे आपसे को जो है वह रेजिग्नेशन देना पड़ता है। आपके ख्याल में ये सही ताबील है? क्या ये किसी अक्ल और दलील पर मबनी है? मैंने एक अपने कानों से सुना कि एक साहब ने, जो मिनिस्टर, सिटिंग मिनिस्टर, एंड ही डज अ प्रोग्राम ऑन रिलीजन ऑन टेलीविजन, एंड ही सेज कि मेरी बेटी ने, जिसने एमबीबीएस किया हाल में, मुझे बताया है कि मेराज का वाक़या किस तरह आइंस्टाइन के लॉज के मुताबिक हो सकता है। सुभान अल्लाह। पीएचडी फिजिक्स को समझ में नहीं आती कि आइंस्टाइन की रिलेटिविटी क्या है। बर्टन रसल ने कोई किताब लिखनी पड़ी कि एबीसी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। उनको एमबीबीएस लड़की ने पाकिस्तान में ये बता दिया कि मैं बताती हूं आपको कि मैं तो बता सकता, क्योंकि हर आदमी समझता है कि वो आलिम है। आई थिंक वी आर रनिंग अ डिस्को जिसके अंदर हम ये प्रूव कर, एक हेल्थ टीवी शुरू हुआ पिछले दिन, उसमें शुरू में कुछ बातें हुई कि भाई लंग्स क्या होते हैं, फेफड़े क्या होते हैं, गुर्दे क्या होते हैं, आदमी का दिमाग किस जगह है, टखने किस जगह हैं, इसमें फ़र्क बताने की कोशिश की गई। अब उस साहब को, उस प्रोग्राम को एक हर्बलिस्ट जो है वो उसको कंडक्ट करते हैं, और वो नहायत फजूल सी गुफ्तगू उसके अंदर हो रही होती है कि किस तरह चुकंदर सुबह खाने से आपकी अकल में सितारे जगमगाने लगते हैं वगैरह। Why do we promote unscientificism? My rules with media is that there is no program. I have tried millions of times to say I want to do a program in which I want to talk of science, the world of science. दुनिया में इतना काम हुआ और हमें कतई खुदा पाक की कसम अगर ये मीडिया ने ये बताया हो कि इसमें किसने क्या किया। तो एक तो ये जो रनिंग डिस्कोर्स है। द सेकेंड इशू इन दैट इज रिलेटेड टू दैट इज कि हमारे यहाँ देयर इज अ रीसेंट रिपोर्ट आई रेड जिसके अंदर ये कहा गया कि पाकिस्तान में मिडिल क्लास इज एक्सपेंडेड। देयर इज अ सर्वे नॉट बाय जस्ट us but by international agencies that middle classes have expanded, but nobody seems to understand what it means. Nobody has discussed it in media again, because हम कोई significant बात तो उस पर डिस्कस करते ही नहीं, ये तो तय है पहले से। तालीम पे हम बात नहीं करेंगे उसके ऊपर, मसलन चाइनीज़ छठी जमात से क्यों लाजमी करार दे दी गई, इस पर कोई गुफ्तगू नहीं है। डू यू नो दैट सिंध के अंदर कम अज़ कम एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने बिल मंजूर करवा दिया है कि छठी जमात से चीनी जबान जो है वो लाजमन स्टूडेंट्स को पढ़नी होगी। हेलो, बदीन छठा में कोई आदमी चीनी पढ़ाएगा, वहां तो उर्दू भी नहीं पढ़ा सकता, वो तो सिंधी भी नहीं पढ़ा सकता, क्या इंपोर्ट करेंगे चाइना से? क्या अहमकाना तरीन है ये। लेकिन किसी ने इस पर कोई गुफ्तगू नहीं की, इस पर कोई बात नहीं हुई कि साहब ये क्या बकवास हो रही है। मुझे एक तो दूसरी बात मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो मिडिल क्लास का जो एक्सपेंशन है, इट्स नॉट बीइंग टॉक्ड अबाउट। व्हाट इट मीन्स इज दैट योर इंटेलेक्चुअल क्लासेस आर स्क्वीजिंग, दे आर बिकमिंग थिनर, and your middle class is expanding at the cost of your intellectual elite and manufacturing elite. The entrepreneur and the manufacturer and the thinker is squeezed. They're moving out.
What you are having instead, what Marx would call the bourgeoisie, the mercantile class, and the trading class. And the bourgeoisie values are exactly what are reflected, which is that on a scale, if you look at it, from a liberal interpretation of a religion to a very fundamentalist concept, the middle class will always be in the middle. Masjid bhi jayegi, lekin sasta bhi nahi bechegi. Zakhira andozi karegi, lekin namaz zarur padegi. I have never seen so many people going to mosque in my life here, as I see today. It is the rise of the middle classes. It is the right of the bourgeoisie which is doing it. Bourgeoisie is always for status quo, no change. We know that bourgeoisie stands basically for profiteering and nothing more and nothing less, and that is what is happening. We know that bourgeoisie stands for invariably for religion. Invariably for it. So please be aware, these sociological changes are not being reported and not being discussed. I think that we should be talking about it. Yeah? The last point is that we have very stupid notion what is morality. Hundreds of studies indicate that your sexual morality comes from your parents. Hundreds of studies are there. Your social morality comes from your peers. Your parents cannot do it. That's why बाप बेटे की कभी नहीं बनती. इरफान साहब की बात अलग है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा. But there is a cleavage in generations. The reason is because you will never be listening to him. Never. You never derive. You will get your morality from your peers. That's why people start smoking when they see the friend smoking. And last but not the least, there is abstract morality. The abstract morality, Chomsky tells us, and John Rawls in his famous book, Theory of Justice, both have argued that comes from innate behavior. Human beings are endowed with the concept of fairness. And all morality stems from that. This is Rawls' argument and Chomsky's argument. So how can you, on television, sit and give me a lecture every day about being moral? How can you expect me to be, just because listening to that I'll become moral? Morality doesn't change like that. More serious issues are involved there than this. आप कहें कि हाँ हर आदमी को सही हो. एक साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा आप कहते हैं कि साहब इस्लामिक स्टेट बन जाएगी, सब मसले हल हो जाएंगे, किस तरह? कहने लगे जी वो बिल्कुल जैसे ही वो बनेगी इस्लामिक स्टेट तो हर आदमी सीधा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, रिश्वत लेनी बंद कर देगा, झूठ बोलना बंद कर देगा, बहुत अच्छा आदमी हो जाएगा, तो लिहाजा माशरा जो बिल्कुल बदल जाएगा. Do you believe that nonsense? I hope not. Because this is what we are being given by the media day in and day out. I have a lot of jhagda with them. I think that they are talking and giving us things, and they should be curbed and stopped. They should not spread ignorance, should not spread what is known as pseudo-science by calling it science. They should not promote the ideas like it is possible to explain religion by referring to Einstein. And last but not the least, they must resist from the fact that in the society that we live in, to bring about change, you require leadership of thinking, the intellect, and it is absent from your media. It is absent. Dr. Tariq Rahman, who is an excellent scholar, I've never heard him on the media. Dr. Aisha Jalal, I saw only once. They are your luminaries. We don't think they are. बाबा रहमान को आप 18 हफ्ते देते हैं, आयशा जलाल को 1.5. तो जो हमारा हशर होगा वो हो रहा है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू वेरी मच.
Dr. Saqib, could you present Kazmi Saab with a token of our appreciation? I am.